Back to Just Law on IQRA TV. I'm your host Ilyas Bulbulia, and this is we were looking at European applications, in particular somebody who's here and married or in a relationship to a European national, and how they apply for a visa or a residence card in order to demonstrate that they've got the right to live in the United Kingdom. And I went through the key documents which need to be submitted in terms of mandatory documents, which, if they're not submitted, would result in the application being rejected. And what I now want to do, which is what I started just before the break, was to, and as I said earlier, the two main issues for somebody who's married and in a relationship with a European national, the two main issues are finances, and secondly, it's the evidence of the relationship. Once we've covered that, I'll look at the situations where people aren't married and they're just simply living together, how we deal with those applications. But let's look at finances first. I do apologize. Now, as far as finances are concerned, the key issue really here is that what the Home Office wants to see is that the European national is exercising treaty rights. This is something that you'll come across whilst we look at applications, etc. But let's take our call and then we'll go into this in greater detail. Hello, Assalamu alaikum. Hello, Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Thank you for calling. Thank you. I just wanted to ask a question in relation to direct family members of European citizens. Right, okay. It's in relation to my nephews. Okay. Their visa or their leave to remain was curtailed. Okay. But their father is a European national who is exercising treaty rights. I understand. Okay. Okay. They need to make an application to show that they are dependent because they cannot work. So at present, they are financially dependent on their father. Right. Is that something that they can succeed in? Potentially. How old are your nephews? Are they under 21 or over 21? Or? One is 21. One is 23. One is 23. Right. I mean, potentially they would be able to make an application here, because if their father is a European national, then direct family members, which is the father's children, sons, daughters, or even grandchildren, to be quite honest, they are potentially able to make an application to stay here on the basis that their father is a European national. But somebody told us that if they're over 21, they can't be dependent on the father's application. Absolutely. I mean, this is the point I was coming to. If they're under the age of 21, there's no need to even show dependency. They can simply show that they are the children of the European national. And if they do that, it's fantastic. But once they reach the age of 21, they have to show dependency. So they have to show that they are dependent on their father. Now here the key point for your nephews is that if they are working themselves or they've got money of their own, then it's going to, right, fantastic, because if they do, then it becomes difficult for them to show dependency. But let's say, as you say, the nephews are here over the age of 21 and they're not working, they may be at home, etc. Maybe they're not allowed to work. If that's the case, as long as they can show that they are financially dependent on their father, as in dad is giving them money, dad is providing them with a home, he's paying for food, he's paying for the bills, he's maybe giving them pocket money, etc. That is financial dependency. So if your nephews can show financial dependency, even though they are over the age of 21, they can still make an application to stay here on the basis that their father is a European national. Now, but would we have to submit documentation with the application to show that the father, does the money have to be going from the father's account to the children's account? Sure. I mean, or do we have to show that in bank statements? I understand where you're coming from. Ideally, that's what you would show. So ideally, what you would show is that the father is earning money, he's got some money in his then personal account, maybe there's wages coming into his personal account, and from that he's giving money to his children. Ideally you'd show that. But even if that isn't the case, there is still no problem in submitting a case on the basis that the dad doesn't have to be given money, as long as he's paying for the house that they live in, as long as he's paying the bills, he's paying for food, etc.
that is financial dependency as well. So there doesn't have to be necessarily money being given to the nephews. It would help if there is that paper trail where money is coming out of the dad's account, personal account, and for like gym membership and mobile phone. Absolutely, that absolutely. I think you've hit the nail on the head. That helps to show financial dependency. Now, if some clients, I don't know what the situation is with your nephew, but I do find maybe some clients aren't switched on enough to get these things in order, and maybe things are a bit haphazard. Maybe the documentary evidence that you need in terms of bank statements aren't there. But as long as you know, dad can say, look, I am earning money, this is money that's coming in, and we can demonstrate that the nephews don't have an income themselves, hopefully we should be able to persuade the Home Office, or if not the Home Office, hopefully we should be able to persuade the tribunal that, look, it must be dad who's paying for the children because the children aren't working. Dad does have money coming in, the children have no income, so how are they living? Hopefully, by inference, the judge will accept that dad is paying for the nephews, and on that basis, even though they're over the age of 21, they should be given the right to live in the United Kingdom. I hope that answers. Thank you. Yes, just also in relation to extended family members, somebody said that there is a case called Salah that was overturned recently. Sure. I think in relation to extended family members. It's only because he has nephews and nieces. So how would Salah help? And has it been overturned? Is that correct? I understand. And on this show, I think in the last couple of weeks, we did touch upon the case of Salah. Salah was a case where what the court basically said to the tribunals, what the upper tribunal said to the tribunals, is that you don't have the right to hear an appeal where the Home Office has rejected an extended family member application. So, for example, the dad who's the dad in this case, who's a European national, may want to support his sons and may want to support his application. Prior to the case of Salah, in the Court of Appeal, what the Home Office was doing and what the first year tribunal was bound to do was to say, look, the Home Office has rejected your application, sorry, we can't entertain your appeal. But luckily, what's happened now is the Court of Appeal has now looked at this issue again and said, look, to the upper tribunal, you've got this wrong. To the first year tribunal, you've got this wrong. Somebody who's extended family member application, such as the nephew in this case, who's based on the uncle, somebody whose application for a residence card is refused in the UK, they are entitled to a right of appeal before the tribunal. So Salah, that went up to the Court of Appeal, clarified that even in those circumstances, there is a right of appeal. And this is crucial because the Home Office tends, in my experience, to reject the majority of these direct or extended family member applications unless it's based on a husband or wife application. All the other applications seem to be, the Home Office seems to be very keen to reject these applications. So it's essential. But that's ridiculous because the family unit doesn't just comprise of a husband and wife, it comprises of children and extended family members as well. Absolutely. And the whole idea behind this is this, under European law especially, the idea is that there shouldn't be anything that hinders a person's right to or willingness to work in a foreign country. If you're going to stop the person from being able to bring their children there, bring their wives or husbands there, or nephews and nieces if they're in your same household, etc. If you're going to restrict somebody's right to have family members join them or live with them, then that person is less likely to go and work in another European country. Restrict one's ability is that there shouldn't be anything that hinders your free movement within Europe. And this is something. How much time do we have before Brexit happens to make these applications? I think realistically, at least we've got another year or so at least. And after that, I think there's going to be some kind of transitional period. And what's going to happen is, I think there's going to be a standstill position where the law as it is today will continue during the transitional period. So that may take us from 2018-19 up to 2021. And then it's after that, I think, the more watered down European laws will be introduced, whereby some of the more fringe members of the family,
call them that. Husbands and wives will be okay, but nephews, nieces, aunts, aunties, they won't be able to, I suspect, come to the United Kingdom with a European family member. So they'll restrict, I think, later on who's going to be able to come to the United Kingdom. But thank you very much for your call. That's, you've asked some very interesting questions. Thank you very much for that. Now then, just going back to the matter we were discussing, which is in particular, where you're making a European application, what I was saying was that it's essential that you have financial documents in place which demonstrate that the European national is exercising treaty rights. Before we go into that in greater detail, let's take our next call. Hello, Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. जी भाई, thank you for calling. जी भाई, what's your question? मेरा क्वेश्चन है जी, ये मेरी वाइफ का अप्लाई करना है स्पाउस वीज़े के लिए, एक्सटेंशन के लिए जी फरवरी में जी, ओके। उसके लिए पूछना था, ये हम दोनों जॉब करते हैं, हम दोनों के जो ऑफर लेटर लाजमी चाहिए होते हैं, जॉब ऑफर, और प्लस जब एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना है दोनों को बर्थ सर्टिफिकेट भी चाहिए, और इसके अलावा बाकी चीज़ें क्या क्या चाहिए वो भी बता दो। जो फाइनेंसेस की जो बात है ना, तो अगर वो 18,600 का रिक्वायरमेंट जो है वो एक्सटेंशन के वक्त भी अप्लाई होगा। सो द एक्सटेंशन नहीं, वो जॉब ऑफर लेटर लाजमी चाहिए, वो तो हम मीट करते हैं, लेकिन जॉब ऑफर लेटर दोनों का चाहिए होता है? दोनों का। इफ अगर एक आदमी की इनकम से अगर आप मीट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी इनकम से, तो ऑब्वियसली वाइफ की ज़रूरत नहीं है। मगर इफ दोनों की इनकम मिलानी पड़ती है, आपका 10,000, वाइफ का 10,000, तो दोनों का। सॉरी, मेरा क्वेश्चन था कि जो वो तो हम मीट कर रहे हैं, जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट एज अ जॉइंटली मीट कर रहे हैं ना, दोनों की इनकम पे अगर आप रिलाई करते हैं तो दोनों के डॉक्यूमेंट्स डालने पड़ेंगे। एम्प्लॉयमेंट लेटर, वेज स्लिप्स एंड बैंक स्टेटमेंट्स दोनों के करने पड़ेंगे। नहीं, और एम्प्लॉयर से ऑफर लेटर भी चाहिए, जॉब ऑफर लेटर? वो जॉब ऑफर लेटर नहीं चाहिए ना, जॉब ऑफर लेटर जब काम शुरू करते हैं तब देते हैं ना। सो जॉब ऑफर लेटर नहीं, ऑफर लेटर की कोई ज़रूरत नहीं है। एक कॉन्फर्मेशन लेटर चाहिए विच इज़ अप टू डेट। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप फरवरी में अप्लाई करेंगे तो जो एप्लीकेशन डालेंगे, इससे एक डॉक्यूमेंट विच इज़ नॉट मोर देन 28 डेज ओल्ड, सो जनवरी में इशू हुआ होगा या तो फरवरी में, सो अप टू डेट लेटर चाहिए ना, कंफर्मिंग एम्प्लॉयमेंट। वो ओरिजिनल लेटर नहीं चाहिए, ऑफर लेटर भी नहीं चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट की भी कोई ज़रूरत नहीं है, और P60 भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर है तो डाल सकते हैं, मगर वो कंपल्सरी डॉक्यूमेंट्स नहीं है। और इसके अलावा दोनों के बर्थ सर्टिफिकेट भी चाहिए? बर्थ सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत नहीं है आपको। वाइफ के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा। सो मैरिज सर्टिफिकेट अगर उर्दू में है तो उसका ट्रांसलेशन डालना पड़ेगा, मगर बर्थ सर्टिफिकेट्स आपकी और वाइफ की वैसे ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास बच्चे हैं, चिल्ड्रन है, तो उसकी बर्थ सर्टिफिकेट्स डालनी चाहिए आपको, टू शो के वो आपके बच्चे हैं, और इट शोज़ के आपकी रिलेशनशिप भी जेन्युइन है। और इसके अलावा और क्या क्या चाहिए बाकी डॉक्यूमेंट्स? थोड़ा बाकी जी मैं बता देता हूँ। जो नॉर्मल हमारा स्टैंडर्ड एप्लीकेशंस में होता है कि आपकी पासपोर्ट, वाइफ की पासपोर्ट, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स वाइफ की, आपकी 1 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स, फिर मैरिज सर्टिफिकेट डालेंगे आप, 6 मंथ्स वेज स्लिप, 6 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट्स, कॉन्फर्मेशन लेटर, अकोमोडेशन का कोई डॉक्यूमेंट्स आप डाल देंगे, रेंट पे है या आपके नाम पे है, प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन डीड की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड देन फाइनली रिलेशनशिप के जो डॉक्यूमेंट्स वो मांगते हैं, अगर आप 2.5 ईयर्स से आप सेम जगह पे रह रहे हैं, तो दोनों के जो भी डॉक्यूमेंट्स आए हैं, फॉर एग्जांपल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, टेलीफोन, टीवी लाइसेंस, बैंक स्टेटमेंट, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके नाम पे आए हैं, वाइफ के नाम पे आए हैं, रफली 15-20 डॉक्यूमेंट्स 2016 के, 2017 के डालने पड़ेंगे रिलेशनशिप के। सो मेनली इतने ही डॉक्यूमेंट्स होते हैं। और वन इसेंशियल अदर रिक्वायरमेंट है विच इज़ द इंग्लिश रिक्वायरमेंट, कि वाइफ को तो कर लिया B1 वाइफ ने। चलो माशाल्लाह, ये तो एक्सटेंशन एप्लीकेशन है ना, इंडेफिनिट नहीं है ना, एक्सटेंशन है ना। एक्सटेंशन है जी, वो B1 ठीक है जी। वैसे तो उसकी रिक्वायरमेंट A2 की रिक्वायरमेंट है, मगर B1 कर लिया दैट्स फैंटास्टिक, B1 से चल जाएगा काम। तो बस यही मेन रिक्वायरमेंट्स है। इसके साथ आपको NHS की फ़ी पे करनी पड़ेगी ऑनलाइन, और जो एप्लीकेशन फॉर्म है
वो डालना पड़ेगा आपको। बट जनरली और जो करते हैं प्रीमियम सर्विस तो कितनी देर पहले बुक करना पड़ता है? प्रीमियम सर्विस का ये है कि एट द मोमेंट रफली आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा 2 to 3 weeks लेटर। सो जी आज अभी अप्लाई करेंगे ना तो आपको डेट मिलेगी 2 to 3 weeks लेटर। सो वो आपको तो वो उसी दिन वीजा दे देते हैं या उसमें वेट होता है? जनरली स्पीकिंग 99% 95% ऑफ केसेस में वही दिन पे वो वीज़ा दे देंगे स्ट्रेट अवे। जी भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल, जज़ाकल्लाह फॉर कॉलिंग, थैंक यू है, थैंक यू। विल टेक आवर नेक्स्ट कॉल। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, थैंक यू फॉर कॉलिंग। हाँ भैया, मुझे 2-3 छोटे क्वेश्चन जी ठीक है, नो प्रॉब्लम। जी मैं भैया यूरोपियन, मैं इंडियन नेशनल हूँ। मेरे यूरोपियन से लड़की से शादी हुई थी जी 2013 में जी। और उन्होंने फिर बाद में कन्वीनियंट मैरिज साबित कर दिया। हाँ, मैं कोर्ट में जाके केस जीत गया जी ओके और मुझे 5 साल का वीजा मिला। जी लेकिन मेरा 5 साल जो 2021 में खत्म होते हैं वीजा के साथ, जी तो मैं मेरे और मैरिज के साथ मेरे 5 साल नेक्स्ट ईयर खत्म होते। जी तो उसके बेस पे मैं 5 साल मैरिज के बेस में मैं वीजा अप्लाई कर सकता हूँ जी रेसिडेंट का? जी एक क्वेश्चन है। जी कर सकते हैं ना। आपकी शादी तो वो यूरोपियन नेशनल के साथ हुई है ना? हाँ, यूरोपियन नेशनल। और नहीं कर सकते हैं, अगर आपकी शादी के 5 साल हो जाएंगे तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकेंगे 5 साल तो के मसला बाद। तो नहीं आ सकता ना नहीं, कि वो नहीं। अभी वीजा के 5 साल गिनते हैं? नहीं 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 नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 5 years के आप बता सकते हैं शादी हुई थी, आफ्टर दैट 5 years आप दोनों वाइफ काम कर रही है और वो यूके में है, आप भी यूके में है, आप दोनों साथ में रह रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 5 years के बाद कर सकते हैं। वीज़ा बाकी है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा एक क्वेश्चन है कि मेरी वाइफ अभी 5 साल अभी खत्म हो गए जी तो उसका परमानेंट रेसिडेंट का अप्लाई करना है जी कि लेकिन उसमें क्या है, लेकिन लास्ट 2 साल की उसकी इनकम 8,000 से ऊपर है, लेकिन फर्स्ट 3 years की उसकी इनकम 8 साल से ऊपर नहीं है, 4,000 5,000 है, तो उसके जी मसला आ सकता है? नहीं नहीं, मसला तो नहीं आ सकता। इवन वो टाइप ऑफ इनकम है ना, वो भी सफिशिएंट है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ वो आपको डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा कि उसकी वो इनकम थी वो टाइम पे, सिर्फ वो डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा। सो फॉर एग्जांपल अगर वो वेज स्लिप्स उसको मिल रही थी, तो सिर्फ प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपकी वीकली इनकम 100 pounds है तो इसमें कोई टैक्स और नेशनल इंश्योरेंस डिडक्ट नहीं होता। तो समटाइम्स सेल्फ एम्प्लॉयड थी वो, आपने एंड ऑफ द ईयर एज लॉन्ग एज अकाउंटेंट ने जो फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाए हैं, अकाउंटेंट आपको लेटर दे देगा, और अगर टैक्स रिटर्न उसने किए हैं और इसमें 0 टैक्स और NI आया तो वो ठीक है, इसे चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा एक, मैं अभी बेटी पैदा हुई ना, अभी 3 महीने पहले वो यहाँ पैदा हुई जी, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? उसके लिए ब्रिटिश पासपोर्ट डायरेक्टली आता है कि यह मेरी बीवी के? डेफिनेट हो जाएगा। तो फिर आपकी जो बेटी है उसके लिए स्ट्रेट अवे तो वो पासपोर्ट नहीं लेंगे, आपको उसको रजिस्टर करना पड़ेगा एज अ ब्रिटिश सिटीजन। वो और पासपोर्ट के लिए बाद आ सकता है? उसके बाद वो पासपोर्ट देंगे। मगर ये जो आप कहते हैं ना कि 5 साल एक और ऑप्शन है। वाइफ के कितने साल हुए यूके में काम जो वाइफ ने किया है, कितने साल हो गए? करते हुए 5 साल खत्म हो गए उसके। राइट, तो जब 5 साल खत्म हुए वाइफ के, तो उसके बाद बेबी बोर्न हुई कि इससे पहले? उसके 2 महीने पहले ही बॉन्ड हुई है। राइट, ओके। अगर बार होती ना तो आप पासपोर्ट के लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, मगर बिकॉज 5 साल के जो काम के रिकॉर्ड होते हैं उससे पहले बेबी बॉर्न हो गई, इसलिए जब वाइफ को परमिनेंट मिलेगा तो फिर बेबी को रजिस्टर करना पड़ेगा एज अ ब्रिटिश नेशनल। स्लाइटली लॉन्गर प्रोसेस है, इसमें थोड़ा सा खर्चा भी ज़्यादा आता है, मगर डायरेक्ट पासपोर्ट नहीं मिलेगी, उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर के बाद 1 साल के बाद मिल सकता है? नहीं, बेबी को तो दे देंगे। जब वाइफ का जब परमिनेंट आएगा ना तो बेबी के लिए तो स्ट्रेट पासपोर्ट, बेबी के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। वाइफ को 1 year वेट करना पड़ेगा, बेबी के लिए नहीं। आपकी ऑफिस कहाँ पे है? यहाँ हम पे ड्यूसबरी में है। ड्यूसबरी वो कहाँ पे? मैं बोल्टन में रहता हूँ। जी बोल्टन में, और बहुत लाइन से बोल्टन से भी ड्यूसबरी में ऑफिस है। ड्यूसबरी टाउन सेंटर में ही है। मुझे आपका एड्रेस है, मैं आपसे मिलके वो मेरी वाइफ का भी वो रेसिडेंट का अप्लाई करना है तो आपसे ही वो भी करवा लूँ। तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप अगर कॉल पे रहे तो वो कंट्रोल रूम में से दे विल टेक द नंबर फ्रॉम यू, और मैं आपको फ़ोन कर दूंगा, ठीक है ना? ठीक है, विल टेक आवर नेक्स्ट कॉल।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो सर, वालेकुम सलाम जी, सॉरी यू आर देयर। जी भाई, व्हाट्स योर क्वेश्चन? मैंने पूछना था कि मैंने अपनी मदर सिस्टर का एक्सटेंडेड फैमिली, मदर का डायरेक्ट फैमिली मेंबर और सिस्टर के एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर के लिए एप्लीकेशन दी हुई है। तो मेरी सिस्टर अंडर 21 थी जब एप्लीकेशन की जी। तो मैंने आपका प्रोग्राम सुना था, तो मैंने उसमें पूछना था कि क्या डिपेंडेंसी अंडर 21 के लिए अपनी सिस्टर के लिए मुझे शो करनी होती है या नहीं करनी पड़ती है? बिकॉज वो एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर एप्लीकेशन है ना, एक्सटेंडेड है ना। जब वो डायरेक्ट जो होते हैं ना, डायरेक्ट फैमिली मेंबर्स, फॉर एग्जांपल हस्बैंड और वाइफ या चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 21, तो उसके लिए डिपेंडेंसी की कोई ज़रूरत नहीं है डायरेक्ट फैमिली मेंबर्स के लिए। whereas एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स जो होते हैं ना, उसके लिए डिपेंडेंसी बताना पड़ता है। और मदर के लिए? और मदर के लिए भी होता है। मदर इज, ऑल्दो वो डायरेक्ट है, बट दे आर, वो कहते हैं कि फैमिली मेंबर्स इन द असेंडिंग लाइन। जब डिसेंडिंग लाइन होती है ना, आइदर हस्बैंड वाइफ या तो फिर चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 21, तो इसमें कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है। जब इफ़ यू लुक एट योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, तो इसमें डिपेंडेंसी बताना पड़ता है। और देन साइडवेज अगर हम देखते हैं, ब्रदर्स, सिस्टर्स, अंकल, आंट्स, एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स, इसमें भी डिपेंडेंसी होती है। बट देयर आर डिफरेंट वेज होता है डिपेंडेंसी का। डिपेंडेंसी तो है बताना, मगर हाउ डू यू शो डिपेंडेंसी, वो डिफरेंट है। मदर के लिए डिफरेंट है आपकी, और आपकी जो सिस्टर्स होती है उसके लिए डिफरेंट है। मदर के लिए सिंपल पॉइंट है कि वो सिंपल है कि वो डिपेंडेंट है या नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर आप पाकिस्तान पैसे भेजते रहे और 1 साल के लिए, और फिर आपने अप्लाई किया, तो दैट्स फाइन, दैट्स इनफ। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बिकॉज मदर आप पे डिपेंडेंट है and you can call her here। मगर जो सिस्टर का जो होता है ना, एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर का जो डिपेंडेंसी होता है, उसके साथ और कंडीशंस होती है। नॉर्मली क्या होना चाहिए कि इफ़ यू आर अ यूरोपियन नेशनल, फॉर एग्जांपल आप स्पेनिश नेशनल है, तो ये बताना पड़ता है कि जब आप स्पेन में थे ना, तो योर सिस्टर लिव्ड विद यू, या तो योर सिस्टर वाज फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन यू। आप पाकिस्तान पैसे भेजते रहे when you were in Spain। फिर जब आप UK मूव हुए, then you can say कि my sister who was living with me, she is going to move with me। So prior dependency बताने की ज़रूरत है। She was living with me and she will move, या तो I was supporting her financially from Spain, sending money to Pakistan। Now I've moved to the UK, I am still supporting her financially from here by sending money to Pakistan। So I want to sponsor her। इस पे dependency is more complicated for extended family members। एक मैंने पूछना था कि मेरी सिस्टर इधर ही है 2015 से, तो तब से मैं अब उसको वो कर रहा हूँ फाइनेंशियली सपोर्ट, तो उसके मैंने बैंक स्टेटमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स और रिसीट्स, शॉपिंग की और बिल्स की और सारे भेजे। तो क्या जो यूके के अंदर 2015 से डिपेंडेंसी है, क्या वो भी काउंट होगी? नहीं, वो यहाँ काउंट नहीं करेंगे एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर एप्लीकेशन में, क्योंकि वो जो आपके मूव इन द यूके में जब मूव हुए, उससे प्रायर डिपेंडेंसी आप नहीं बता सकते ना। सो फॉर एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल इज दिस, आप यहाँ है 2015 से उसको सपोर्ट करते हैं। अगर आप अभी आइलैंड चले जाए या तो आप स्पेन चले जाए, तो इन दैट प्लेस आप यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज यू कैन से कि जब मैं यूके में था तो आई सपोर्टेड हर फाइनेंशियली, सो प्रायर टू माई मूव शी वॉज डिपेंडेंट ऑन मी। अभी मैं मूव हो रहा हूँ टू अनदर यूरोपियन कंट्री एंड शी इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन मी। सो प्रायर टू द मूव आप डिपेंडेंसी बता सकेंगे। इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। प्रायर वाले में मैंने मनीग्राम एक्सेप्टेबल है, वेस्टर्न यूनियन मनीग्राम 100%। इसमें सिर्फ ये दिस इज व्हाट यू शुड डू कि यहाँ से आप मनीग्राम के प्रूफ भेजेंगे, राइट, कि आपने मनीग्राम से पैसे भेजे। वहाँ से जो मनीग्राम उसको मिलता है ना पैसे, तो वहाँ की भी रिसीट रखनी है। सो दोनों जगह की रिसीट रखनी है, यहाँ से जो भेजते हैं वो भी, और वहाँ जो उसको पैसे मिलते हैं उसकी भी रिसीट रखनी है, इसकी भी रिसीट रखनी है आपको, दोनों जगह की। तो पहले 17 की थी, तो उसके वो कैसे होगा, क्योंकि वो तो मदर के पास सारे पैसे जाते थे, तो मतलब 17 ईयर्स ओल्ड तो अपने नाम पे तो नहीं आई थिंक कर सकता। नहीं, देन यू हैव टू आर्ग्यू दिस कि लुक, हम मदर को जो मैं पैसे भेज रहा था, इट वाज फॉर बोथ ऑफ देम।
it was for my mother and for my sister as well. That's how you'll have to demonstrate prior dependency, prior to the move to the UK. It was complicated here. I'm sorry I can't really go into this in more detail because we're short of time, but thank you very much for your call. That unfortunately does bring us to the end of the show. Hopefully we'll be back next week on Monday at 6 o'clock. Until then, Assalamu alaikum and take care.